It's so good to see that they have come to cherish the achievement of the students, what they have learnt in the school. What an enchanting ambience. These young ones playing beautiful drum beats. And मैं भी इस मौके पे मुझे भी एक गीत याद आ रहा है जो कि एकदम सटीक लगता है मुझे आज के मौके पे. मैं भी उसको गुनगुनाना चाहूँगी. मैं आई रम्या? Of course, why not? चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले. ये प्यारा समा हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा है जहां सपनों का आकाश है, संस्कृति का चांद है और विविधता के तारे हैं. Yes, it all began in 2019 with Atulya Bharat Bhag 1, continued in 2023 with Bhag 2, and tonight in 2025 we are proudly presenting Atulya Bharat Bhag 3 Anadi Se Anant Tak, a journey of art, culture and timeless tradition. And at this juncture, we extend our heartfelt welcome to our chief guest, Sir Shri Purushottam Rupala ji, Honorable Member of the Parliament, a visionary leader whose decades of service, both in state and central government, reflects his deep commitment to public welfare and national growth. We are equally honored by the presence of our guest of honor, Sir Shri Ajay Kumar Tomar, former Commissioner of Police Surat, who is a vigilant, dedicated leader and a true friend, philosopher and guide to our Goenkan family. A warm welcome to Sir Shri Charanjit Singh Gulati, IRS, and member of NCLT, whose wisdom and administrative acumen have left a lasting mark on governance and policy. We also extend a heartfelt greeting to Sir Shri Vallabhai Kakadia, Director, Sheetal Manufacturing Company Private Limited, and Shri Praveen Bhai Kakadia, Director, Paddiam Manufacturing Private Limited, the stalwarts of entrepreneurship and innovation. A special mention to Sir Shri Manoj Kumar Godara, an educator turned entrepreneur, founder of Budget Logistics and a contributor to educational reforms. An inspiration he is to many. We are privileged to welcome our special guests today, Shri Vicky Bhai Ajmera and Dipali Ben Ajmera from Mumbai. We are really happy to have you with us today. Adding on, we fondly remember our beloved founder chairperson, late Srimati Varsha Manhar Bhai Kakadia, whose vision continues to illuminate our path. With equal pride, we acknowledge our esteemed chairperson, Mrs. Ekta Kakadia, whose guidance strengthens the foundation of who we are day in and day out. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जब भी हम अपनी प्यारी वसंत बा को याद करते हैं. उनका प्यार और वार्म हर मोमेंट पे को और भी स्पेशल और मेमोरेबल बना देता है. और हमारे बीच है हमारे ही परिवार की सदस्य रितिका मैम, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मिशन कामयाब, empowering students towards excellence. Our heartfelt gratitude to the SMC members, PSA, Food Committee, and to all the parents for your unwavering support that you time and again always give to us. So, to begin this wonderful evening, it is customary to invoke the Almighty before the commencement of any auspicious event. And to take this divine start forward, I request our student anchors come head boy and head girl of our school, Dhairya Dulani and Khwaish Batra, to take over. Thank you, Ramya ma'am and Shweta ma'am. Good evening, ladies and gentlemen.
I am Dhairya Dulani, the head boy of GD Goenka International School. Namaste and a very good evening. I am Khwaish Batra, the head girl of our school. Together, we are truly honored to welcome you all to this grand celebration of creativity and togetherness. Every auspicious occasion begins with the sacred glow of a lamp, a timeless symbol of wisdom, purity, and enlightenment. दीप प्रज्वलन केवल एक परंपरा नहीं, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असत्य से सत्य की ओर ले जाती है. With this, we take great pleasure in inviting our Honorable Chief Guest, Sir Shri Purushottam Rupala ji, all guests of honor, our esteemed trustees, our special guests, and respected top management members to kindly come forward for the lighting of the ceremonial lamp, marking the start of this beautiful evening. सर, आप सभी लोग आज यहाँ का प्रांगण पूरा भरा पूरा देखकर हमें पता है, हम जानते हैं कि आप सभी हमारा परिवार हैं. आप लोगों की प्रेजेंस से ही हमारी फैमिली कंप्लीट होती है. हम आप लोगों को एक फैमिली मेंबर की तरह ही समझते हैं और मानते आए हैं. आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे प्रोग्राम की दीप प्रज्वलन के द्वारा. करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दिव्या दिव्या रे दीपत्कार कानी कुंडलमोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वात दिवा तेवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतां पाशी. Thank you, dignitaries. You may kindly take your seats. Our heartfelt gratitude for the blessing of this evening. You have blessed. Thank you everyone once again. Tonight we witness as 200 talented students from class 1 to 12 unite in harmony. Voices, instruments, and hearts beating as one. 21 euphoric young Goenkans on keyboards crafting the melody. 20 on guitars weave rhythm, and yet another 20 percussionists bring heartbeat of devotion alive in a few moments. Joined by over 120 vocalists and overall 200 students, the young maestros on flute, violin and sitar. So get ready to sway to the rhythm of music and devotion. Let's welcome them with a thunderous round of applause.
wasn't just a performance, it was a prayer, a celebration, a tapestry woven with rhythm and reverence. I would like to thank all of the dear children that just gave us a beautiful performance. Can we have a loud round of applause for them? Tonight, we saw how music turns into worship and voices into light. How our children made us feel the divine through their art. Over 200 young souls sang and played in perfect harmony, united in melody and in purpose. Watching them, everything seemed flawless. Months of hard work, dedication, and passion is what has brought this stage to life. With that, we hand over the mics to our dear teachers. थैंक यू धैर्य एंड ख्वाहिश। डियर पेरेंट्स, मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगी कि ये सारे बच्चे जो ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा थे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं, सारे बच्चे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, वो सब बच्चों ने आज लाइव किया। और हमारा PVA डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ GD गोयनका। वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। और उनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो माइस्ट्रोज हैं और बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है आप सब लोग एक परिवार के रूप में आज आए हैं और ये प्रोग्राम आपने देखा। थैंक यू सो मच। Wherever our children go, whichever place, for whatever competition, state level, city level, national level, they bring laurels to our school, and kudos to our team for that. Moving on, dear guests and esteemed members of community, we all know education stands as a cornerstone that unlocks a promising future. To build upon this vision and share the insight on nurturing excellence and holistic growth, it is our honor to invite our esteemed principal, Mrs. Hetal Tamakuwala. Let us welcome her with an enthusiastic round of applause. We humbly invite you, ma'am, onto the stage. थैंक यू रम्या मैम, श्वेता मैम। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आपके सामने ये नहीं बोलने कि हम क्या करते हैं, सिर्फ आपको दिखाना है कि गोयनका क्या क्या करता है। विद अ फॉर्मल नोट, गुड इवनिंग टू एवरीवन, एस्टीम्ड चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, respected trustees, PSA and food committee members, SMC members, GDGI's family parents, our dedicated teachers, blooming birds, and shining Goenkans. It fills my heart with the immense pride and joy to welcome you all to the 8th annual function, Colors of Life of GD Goenka International School, Surat, with the theme, Atulya Bharat Part 3, Anadi Se Anant Tak. Over the years, GD Goenka International School, Surat has carved a distinct place for itself through dedication, hard work and achievements. हमारे परिणाम अपने आप में ही बोलते हैं। हमारे विद्यार्थियों ने बार बार सूरत शहर, गुजरात राज्य एंड देश का नाम रोशन किया है, हर बार अव्वल रैंक प्राप्त करके। We are proud to say that wherever Goenkan goes, success surely follows. Our motto, higher thought, stronger work, better result, truly defines our journey. At GD Goenka International School, Surat, education is not limited to the classrooms. Our students have made us truly proud in every sphere, from academics, where we produce country topper years after year and win multiple medals in different competitions at national and international levels. हमारे छात्र सोचते हैं आलोचनात्मक रूप से और कार्य करते हैं पूरी जिम्मेदारी से। यही है होलिस्टिक एजुकेशन का सही अर्थ। आज का कार्यक्रम अतुल्य भारत पार्ट 3 उसी भावना की एक छोटी सी झलक है। As you watch this performances tonight, remember, हर तालियों की गूंज इन बच्चों की मेहनत, हमारे शिक्षकों के लगन और हमारे अभिभावकों के अटूट सहयोग को समर्पित है। These 3 pillars, students, teachers and parents, make GD Goenka International School, Surat
a true temple of learning and excellence. Together, we continue our journey, nurturing minds, touching hearts, and building futures. So, under the open sky tonight, let us celebrate the incredible performances by our young Goenkans, a true reflection of Anadi Se Anantak, carrying forward the eternal light of learning, culture, and excellence. Thank you for being the part of Atulya journey. Enjoy this evening filled with grace, grandeur, and Goenkan spirit. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am, for your kind words. Yes, at GD Goenka International School, Surat, the hallmark of our education lies in empowering students to create themselves, cultivating originality and confidence. Now, I need to tell you this. Goenka does not follow footsteps. We create the path. एब्सोल्युटली रम्या, जो बात गोयनका के मंच पर है आज हम सब ने देखी और अभी देखेंगे वो कहीं और नहीं. विद दिस वी हैंड ओवर द माइक टू आवर स्टूडेंट एंकर्स ख्वाहिश एंड धैर्य वंस अगेन. थैंक यू मैम. तो ऑडियंस, आइए गणपति बप्पा के चरणों में नमन करते हुए इस शाम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के साथ ताकि हर कार्य सिद्धि और सफलता की ओर अग्रसर हो. Continuing this spiritual odyssey, in a few moments, we shall witness a mesmerizing Bharatnatyam performance that skillfully interlaces rhythm, expression, and narrative. This Ganesh Vandana shall act as our guiding beacon, leading us into a realm of profound and divine insight. So put your hands together for a soulful invocation through the Ganesh Vandana. This has been performed by our talented students from the middle and the higher section. So put your hands together for them. गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय. दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय. गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव 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 रत्न खचित फळा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उडी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभतो बरा झुंझुडती नुपुरे चरणी घागर्या. जय देव 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 जय देव. कृतत्ताण लंबोदर कृतत्ताण वेंकटेश्वर कृतत्ताण धनद वेंकट कनक वेंकट कनक वेंकट कृतत्ताण धनद वेंकट कनक वेंकट धनद वेंकट कृतत्ताण कृतत्ताण कृतत्ताण. स्तवितो तुम्हा संकट अमुचे विलयाला जा. स्तवितो
मुझे विलयाला जाओ. गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय लंबोदर पीतांबर परिमल वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना रामाचा वाटा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. Please give a rapturous applause to the performers on stage. How resplendent they were. बिल्कुल धैर्य. जहाँ गणपति का वंदन होता है वहाँ हर कार्य को सिद्धि और मंगल का आशीर्वाद मिलता है. You know what, Kwaish? Looking at today's performances, everything seems so perfect and smooth. But I tell you, dear audience, it wasn't always like this. And that's when we realize that it's okay if things aren't perfect from the start. That little chaos, those small mistakes, that's what exactly has made this entire process memorable and wonderful. Because this whole evening is the result of those imperfect, hilarious and wonderful moments coming together, turning to perfection right here. So, audience, remember, as you enjoy tonight's performances, remember every step, every movement, and every smile that you see is built on those funny, real, and imperfect moments that made it all truly special. And with that, it's been an absolute joy hosting this segment. Now, with the same excitement, we hand over the mic to our teachers. Over to you, dear teachers. Thank you, children. Dear audience, we are deeply honored to welcome our esteemed chief guest, Sir Shri Purushottam Rupala ji, Honorable Member of the Parliament. आज हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और समाज कल्याण को समर्पित किया है, श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला. Sir has also held distinguished position in Gujarat state as the president and later as the national vice president of the Bharatiya Janata Party. We request our revered trustee and secretary of Ashirwad Kelavani Public Charitable Trust, Sir Shri Kamlesh Yagnik ji, also our very own Parvat sir and Naresh sir, to the stage for the felicitation. It's a graceful moment, having all the dignitaries on stage. Also, we have our Goenkan cadet present here. They are Ark, Lavya, Frashmi and Taksh. Ladies and gentlemen, can we give a huge round of applause to the chief guest for this evening? Also, we're presenting a beautiful memento designed and crafted especially for our chief guest. A beautiful picture to be captured. Thank you so much, dignitaries. रूपाला सर ने जब हमारे स्कूल का शिलान्यास किया था, वो दिन और आज का दिन, जब भी हमें मौका और सौभाग्य प्राप्त होता है, सर यहाँ आते हैं और अपने मोटिवेशन से हमें और नई ऊर्जा भर देते हैं. इसीलिए सर हम आज भी चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स से कुछ कहें. राम राम. जय हो. जीडी गोयंका इंटरनेशनल स्कूलना 8મા વાર્ષિક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો,
ખૂબ જ આદરપૂર્વક પૂજ્ય વસંતબા એમના આશીર્વાદ આપવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બાના ચરણોમાં હું મારા પ્રણામ નિવેદન કરું છું. વસંતબાનું નામ વસંત ઋતુ સાથે સંકળાયેલું છે. એનું ઉમદા પુષ્પ મનહરભાઈ સ્વરૂપે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એનો આનંદ વ્યક્ત કરું છું. 2 કાર્યક્રમો આપણે જોયા. ઘણા બધા ગણમાન્ય આગેવાનો, રાજ્યના અને કેન્દ્રના વરિષ્ઠ અધિકારીશ્રીઓ આપણી વચ્ચે છે. બધા વાલીઓ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના દીકરાઓના પરફોર્મન્સને વધાવવા માટે આવ્યા છે. એની વચ્ચે ભાષણ એ જમતા જમતા અંદર કાંકરો આવે એવું લાગે, એની મને ખ્યાલ છે, એટલે હું એમાં પ્રવેશ નહીં કરું. પણ મેં 2 કાર્યક્રમો જોયા. એક આપણી પ્રાર્થના હતી અને પછી બીજું ગણેશ વંદના. બંને પરંપરા પ્રમાણેના આપણા સનાતન સંસ્કૃતિના પ્રતીક જેવા બંને કાર્યક્રમો હતા. વિશેષતા મારા ધ્યાનમાં એવી આવે છે કે પહેલા કાર્યક્રમમાં લગભગ 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો અને બીજા કાર્યક્રમમાં પણ અંદાજે 100 જેટલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ ભાગ લીધો. 200 લોકો મંચ ઉપર ગાતા હોય, વગાડતા હોય અને આ બધું સાથે ચાલતું હોય છતાં અત્યંત સુંદર અને મનમોહક લાગતું હોય. એનું કારણ છે એ બધા લયમાં બોલતા હતા, એક સ્વરમાં બોલતા હતા. આ માત્ર ને માત્ર રાષ્ટ્રના વિકાસને શીખવા અને સમજવા જેવો બોધ. 200 જણા અહીંયા 10 જણા બેઠા બેઠા જો વાતો આડી અવડી કરે તો ઘોંઘાટ થાય, ડખો થાય, અવાજ આવે, ટોળું લાગે. એને બદલે મનમોહક દ્રશ્યો અને મનમોહક અવાજ, એનું સર્જન એક સ્વરમાં બોલવાનું, એક સ્વરમાં ગાવાનું, એક તાલમાં બોલવાનું, લયમાં ચાલવાનું. આટલું જો આપણા સમાજ જીવનની અંદર ઉતરી જાય તો રાષ્ટ્રને મહાન બનતું કોઈ અટકાવી ન શકે. એવા સુંદર પાઠ આ બાળકોએ આપણને 2 પ્રોગ્રામ દ્વારા આપણા ધ્યાન ઉપર મૂક્યા છે. બધા જ બાળકોને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન. જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને એમના વાલીઓને બધાને શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. थैंक यू सर. आपसे तो गोयनका परिवार का गहरा नाता है. आपने GDGIS का इनॉग्रेशन किया था और हमारे अपकमिंग IB स्कूल्स का शिलान्यास. जो बात आपने कही कि जीवन के हर कदम पर सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है. हर मोड़ पर सुर, तय, ताल और लय के साथ एक कोऑर्डिनेशन हर फील्ड में, हर मोड़ पर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन और सुंदर हो जाएगा. Moving ahead, we are deeply honored to welcome Sir Shri Ajay Kumar Tomar, former Commissioner of Police Surat. And to felicitate this distinguished personality, may I invite on stage Principal Ms. Hetal Tamakuwala, Director Operations Dr. Sejal Thakkar, and Member Senior Management Dr. Shruti Agrawal as a token of our warm appreciation and respect. I request the ushering team to escort our guests onto the stage. A former BSF officer, his vigilance during the challenging COVID times ensured Surat's safety. He is a true friend, philosopher and guide for all of us. All our students look forward to listen to Sir whenever he comes to our school. And every time when he comes, he has innovative and new things to share with our students, be it students at Mission Kamyab or our CBSE school. Sir has taken special sessions with the teachers as well with the students. So his insight has always enriched us. So we are really happy to see Sir after a long time. It's an honor and privilege both to have Sir on stage. Thank you, Sir, for gracing us with your presence. If you could share a few words with us, few words of motivation, how could we not ask you to do that this evening?
नमस्कार। जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री रूपाला साहब का, गणमान्य जितने भी प्रथम द्वितीय पंक्ति में मेहमान बैठे हैं उनका, जितने माता पिता यहाँ हैं सभी पेरेंट्स का और सभी स्कूल के बच्चों का मैं बड़े आनंद के साथ अभिवादन करता हूँ। आदरणीय रूपाला साहब ने अभी कहा कि ये कोई भाषण करने का अवसर नहीं है। अब मुझे नहीं पता मुझे क्यों कहा गया है। कुछ दिन पहले, असल में पिछले साल 2024 में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जीवन में बड़ी मेहनत की, बहुत आगे बढ़े, हर तरीके से उन्होंने प्रगति की और उनका बच्चा बड़ा हो रहा था। उनको लग रहा था कि अपने बच्चे को मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षण जहाँ मिल सके वहाँ भेजूं। वो यूरोप भी गए, वो अमेरिका भी गए। वो मुझे अपना अनुभव बता रहे थे कि मैं अमेरिका एक स्कूल में गया। मैं जानना ये चाहता था कि ये स्कूल इतनी फ़ी चार्ज करता है, इतना महंगा स्कूल है और इतना प्रसिद्ध है, तो वो क्यों है। वो बोलते हैं कि मैं परमिशन लेके उस स्कूल में गया और मैंने कहा कि कोई एक क्लास में देखना चाहूँगा। उन बच्चों को, उन महानुभाव को, हमारे मित्र को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन 5th स्टैंडर्ड की क्लास में लेके गए। तो वहाँ कुछ बच्चे थे, वो कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे और हाइड्रोजन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो उनको पढ़ा रहे थे, ये पूछा है क्या स्कूल के शिक्षक हैं, कि ये स्कूल के शिक्षक हैं और ये MIT के प्रोफेसर हैं। उन्होंने पूछा कि MIT के प्रोफेसर साहब से पूछा कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को कैसे चीज़ें समझाते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने हंस के ये कहा कि यदि मैं इन बच्चों को चीज़ नहीं समझा सकता तो वो मैं बड़े बच्चों को कैसे समझा पाऊंगा। यदि मुझे असल में कोई सब्जेक्ट आता है तो मैं 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी, मेरे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उनको ये समझा सकूं। फिर उनको ये बताया गया इस क्लास के बाकी बच्चे रूफ टॉप पे गए हुए हैं, छत पे हैं। वो देखने के लिए वहाँ भी गए तो उनको देखने को मिला कि वहाँ उन्होंने अपने आप ही पैनल्स बनाए थे, लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स वो खुद कर रहे थे और वो बच्चे करके देख रहे थे कि कैसे किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल इसलिए हैं, जिस लाइन पे मैं देख रहा हूँ जीडी गोयनका भी जा रहा है। स्कूल के जो कार्यक्रम मैंने इस बार देखे हैं, मैं एक बार पहले भी कार्यक्रम देख चुका हूँ, अनुपम उपलब्धि है इस स्कूल की कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हर बच्चा स्टेज पे आकर परफॉर्म करता है। बच्चों को कंप्यूटर्स आना चाहिए, AI टूल्स का उपयोग करना आना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि स्कूल को यह भी सिखाना चाहिए कि AI टूल्स का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना करना चाहिए, किससे आगे नहीं करना चाहिए। मैं 2 बातें और करना चाहूँगा कि अभी आपने सुना होगा कि नोबेल प्राइजेस अभी डिक्लेयर हुए हैं इस साल के। उनमें से नोबेल प्राइजेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेस, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस, इनमें से लगभग 4 अमेरिका को मिले हैं, 2 या 3 इंग्लैंड को मिले हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया को, जापान को मिले हैं, 1 हंगरी को मिला है, 1 वेनेजुएला को मिला है। हमारे लिए चैलेंज है, आप सभी के लिए चैलेंज है, स्कूल के लिए चैलेंज है, राष्ट्र के लिए चैलेंज है कि हमारी गिनती इसमें होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि इन बच्चों को यदि हम ठीक से तैयार करेंगे तो कभी ऐसा टाइम आएगा इस स्कूल से हमारे समाज के बच्चे भी नोबेल प्राइज विनर निकलेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस शानदार तरीके से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है उससे भी सुंदर कार्यक्रम देखने को मिले। स्कूल आने वाले सालों में न केवल सूरत में, गुजरात में, इंडिया में और विश्व में भी अपनी जगह बनाए, लोगों को पता लगे कि भारत में भी इस तरह के स्कूल हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करें, समय की पाबंदी है, वरना दिल चाहता है कि आपको सुनते ही जाएं। Moving on this gracious note, we now welcome to felicitate Sir Shri Charanjit Singh Gulati, former IRS officer and esteemed member of NCLT. To honor his inspiring journey, we invite Mr. Bilal Fayaz, coordinator higher section, and Mrs. Vandana Sharma, coordinator middle section, to kindly come forward. Sir has significantly contributed to India's corporate governance and insolvency framework through insightful and balanced judgments. Can we have a huge round of applause? Thank you so much, sir. Continuing with the felicitation of our esteemed guest of honor, We take this time to warmly welcome on stage Sir Shri Vallabhai Kakadia, Director, Sheetal Manufacturing Private Limited, Shri Praveen Bhai Kakadia, Director of Pat DM Manufacturing Private Limited, and Sir Shri Manoj Kumar Gudara, Founder of Budget Logistics, for the felicitation. I would request Coordinator Primary Section Ms. Shilpa Surya onto the stage, along with Coordinator Pre-Primary Section Ankita Ma'am onto the stage. we have our primary coordinator to felicitate all three guests, Shri Vallabhai, Shri Praveen Bhai, and Shri Manoj Kumar Gudara ji. With profound happiness, we are handing them over a bouquet, our love and respect. We have our GCC cadets also helping us out. So he is Mr. Manoj Kumar Godara. He needs no introduction yet. They have set remarkable benchmark in the community, in businesses, and across. Thank you so much. Let's have a thunderous round of applause for all these stalwarts of inspiration and achievement.